Hello dear students, welcome back to our news channel. Students, today we are going to talk about literacy. So the context is earlier this week Himachal Pradesh was officially declared a fully literate state mean state. Okay, fully literate state. Now the question is, what does fully literate really mean? Does it mean that everyone in Himachal can read and write? Or does it mean schools have reached every village and every person, or is there is more to this story? Okay, so today we will understand all about these things. Now, how is literacy defined? Right, before we jump into Himachal's achievement, so we need to understand this now. See, imagine you are living in a world where you cannot read a signboard, you cannot write your name, you cannot even count money or fill any form. So life becomes really difficult, doesn't it? Now, literacy is not just about reading books in schools. It's about having the basic skills needed to understand the world around you, and so that you are able to make decisions based on that. Okay. So Ministry of Education defines literacy as ability to read, write, and compute with comprehension. This means that literacy include what? It includes reading and writing, yes. Understanding what you are reading or writing. Doing basic math like addition, subtraction, multiplication, division, and even critical life skills like using digital apps, handling money, or understanding important health information. So, as you can see, we can say that literacy is basically freedom. It opens doors to better jobs, better health, and a more confident life. Now, students, let's talk about India. So, back in 1951, just a few years after independence, India's literacy rate, India's literacy rate, you know how much India's literacy rate was that time? It was 18% only. That means more than 80%, more than 80% of people could not read or write. And today, our national literacy rate has jumped to around 77%. So we have come a long way, right? From 18% to 77%. But still, students, there's a lot of work need to be done, like the learning outcome. Literacy, yes, it is important, but learning outcome is equally important. Now, let's talk about the Himachal success. So, here you can see the headline is Himachal Himachal Pradesh is now fully literate. Now, you might think it means 100% of people there can read and write, but that's not exactly true. Ministry of Education says a state can be called fully literate when at least 95% of its population can read and write with understanding. Okay, and Himachal Pradesh में कहाँ कितना है ये level? 99%, 99.3% literacy rate. So which is way above the threshold. Okay, तो
ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही टाइम में हो गया, नो। पहले काफी इसमें गवर्नमेंट ने और लोगों ने इस पे काम किया है। तो अगर हम अ, बात करते हैं इंडिया के लिटरेसी मिशन के बारे में, लिटरेसी स्कीम्स के बारे में, तो 1950s onward, from 1950s onward, India has launched several big programs to fight illiteracy, स्पेशली अडल्ट्स के बीच में, जो जिन्होंने बचपन में स्कूल नहीं जा पाए किसी भी रीजन की वजह से। तो 1960s और 1970s में जो प्रोग्राम्स थे, दे फोकस्ड ऑन फार्मर्स एंड women, because these groups, they often face the most barriers to education. Okay, literacy among women and farmers. Then then in 1978, what happened? National Adult Education Program was launched, and this was a major step to teach basic reading and writing to adults aged 15 to 35. Then in 1988 to 2009, the National Literacy Mission, and basically it's expanded the age group and reached millions of learners. And then from 2009 to 18, साक्षर भारत मिशन, जिसमें फोकस किस पर है? फंक्शनल लिटरेसी, मीनिंग नॉट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग बट ऑल्सो न्यूमरेसी, लाइफ स्किल्स लाइक यूजिंग अ बैंक अकाउंट, रीडिंग, हेल्थ इंस्ट्रक्शन। तो फंक्शनल लिटरेसी पे फोकस है। तो अब फाइनली इन 2022 the government launched a brand new program called ULLAS. Just a second, students. Yes, ULLAS, जिसका मतलब क्या है? Understanding lifelong learning for all in society. So this is the program under which Himachal Pradesh achieved its recent milestone. So how does it work? See, ULAS is designed specially for adults above 15 years. Above 15 years who miss the chance to go to school or dropped out early, किसी भी रीजन की वजह से। अभी कैसे काम करता है? सबसे पहले जो वॉलंटियर्स हैं, जो ऑफिशियल्स है, दे गो डोर टू डोर और दे यूज डेटा टू आइडेंटिफाई पीपल हु कांट रीड और राइट। देन दीज लर्नर्स, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड है? रीडिंग एंड राइटिंग इन देयर ओन लोकल लैंग्वेज, बेसिक मैथ जो क्लास 3 स्टूडेंट को पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे बस का टाइम टेबल पढ़ना, चेक लिखना, तो ये बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। ऑलराइट, देन इसके बाद असेसमेंट होता है, फाइनल असेसमेंट, फाइनल टेस्ट, एंड after the test, which is called functional literacy numeracy assessment test, it's basically it's a 150 mark test in learner's language, chosen language. So passing this test shows that the person has reached the foundational literacy. Okay, और जो क्लियर कर जाते हैं बेसिकली उनको NIOS से एक सर्टिफिकेट टाइप में मिल जाता है, राइट? And through this process, the government ensures that decay does not happen in the literature, in education. So, government ensures that literacy is not just a number, but it's also a real usable skill. ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चों के एजुकेशन पे ही फोकस है, एडल्ट एजुकेशन पे भी उतना ही फोकस है, तभी तो ये अचीवमेंट हिमाचल प्रदेश को मिला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर सक्सेस स्टोरी को हम देखें, देखो 2011 के सेंसस से अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में उस टाइम पे लिटरेसी रेट था 82.8%, राइट? अब उसके बाद क्या हुआ? तो ये देखो 82% है, 82% तो ऑलरेडी जो नेशनल लिटरेसी रेट है उसे ऑलरेडी इट वाज अबव, वेल अबव, ठीक है।
तो नेशनल एवरेज 74 था, तो उससे तो ऊपर ही 82। तो ओवर नेक्स्ट decade what happened, through government initiatives, local volunteers, strong community participation, इसकी वजह से जो हिमाचल प्रदेश में जो एजुकेशन लिटरेसी वो रिमोट विलेजेस और टाउन्स के कॉर्नर तक भी पहुंचे। So by 2023-2024, surveys showed that Himachal's literacy had climbed to 99.3%. Okay, but students, remember, this doesn't mean that every single person can read and write. In fact, the single and recent report estimates that about 12.7% of people aged above 15 in Himachal Pradesh were still illiterate जिससे जब ये स्टार्ट हुआ था। तो अब ये जो ये स्कीम है ULLAS, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर ट्रेन एंड टेस्टेड, तो जिससे कहा गया कि अब जो स्टेट है वो फुली लिटरेट है। ठीक है, तो क्या हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट है? नो, हिमाचल प्रदेश इज द फिफ्थ स्टेट टू अचीव दिस माइलस्टोन आफ्टर गोवा, लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा। तो अगर हम लिटरेसी रेट को कंपेयर करते हैं, तो गोवा की लिटरेसी रेट देखो यहाँ पे आपको सामने है, मिजोरम का है, त्रिपुरा का है, लद्दाख का है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लिटरेसी एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है अभी भी। जैसे बिहार में, बिहार हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इलिटरेट adults, it's around 33%। एंड मध्य प्रदेश में कितना है? 28%। आंध्र प्रदेश में 31। So this shows how even how you know how it's not uniform. Uneven literacy development can be across India. Now, why this matters to us? See, literacy gives what? Literacy gives the people to understand their rights and responsibilities. तो इससे क्या होगा? Citizen empowerment होगा। और जो literate workers हैं, they can handle modern jobs. Okay, तो इससे इकोनॉमी, ऑफ कोर्स इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। एंड लिटरेट पीपल दे कैन रीड मेडिसिन लेबल्स, तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। इन्फॉर्म जो सिटीजन होते हैं उनको पता है कि किसको क्या वोटिंग कैसे करना है, तो डेमोक्रेसी ओवरऑल भी स्ट्रांग होगी। तो हिमाचल की जो अचीवमेंट है स्टूडेंट्स, इट शोस अस व्हाट्स पॉसिबल व्हेन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, कम्युनिटी वॉलंटियर्स एंड सिटीजंस वर्क टुगेदर। All right, so students, that will be all for now, and thank you for joining me today. Keep learning, keep questioning, and keep growing. Bye bye.